Hello everyone, welcome to the channel and very welcome to this playlist in which we are discussing about working operation of 8085, the practicals of 8085 with the help of sim8085. So पिछली बार हम लोगों ने देखा था कैसे हम दो 8-bit numbers का addition कर सकते हैं। एक number जो था that was stored on the memory location 2050 and the other number was stored at memory location 2051 and we had to add them together and the sum was about to be stored at memory location 2052 which we did previously. आज हम लोग उससे similar कुछ question solve करने वाले हैं. Question है write 8085 ALP or assembly language program to add two decimal numbers stored on memory location 2050H and 2051H using DAA instruction and store the result on memory location 2052H. So similarly जिस तरीके से last time हम लोगों ने solve किया था, similarly we are going to solve this about DAA instruction. So it is an instruction which is used to convert the hexadecimal number into the regular decimal digit number. वो कैसे करेगा that I will explain it to you. But first let's start working on the ALP program and I will keep explaining you simultaneously how does it happen. So सबसे पहले हमें क्या करना है, we want to store one number at memory location 2052. So let me write it down one more time. 2050H, sorry 2050 पे करना है store. So that number will be 2050. वहां से हम लोग उसको भेजेंगे accumulator में. एंड सेम वेज बिकॉज एक नंबर हमको चाहिए एक्यूमुलेटर में और दूसरा नंबर वी वांटेड टू बी इन सम रजिस्टर बी एंड देयर इज नो डायरेक्ट वे दैट आई कैन सेंड माय नंबर फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं पहले एक्यूमुलेटर में भेजूंगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू सेंड इट टू रजिस्टर बी. हाउ? सो फर्स्ट एक्यूमुलेटर एंड देन रजिस्टर बी. सेम वेज 2051 के ऊपर जो नंबर है I'm going to send it to accumulator only. So this is what I'm going to do. So we will start with LXI H, 2050H. अब ये क्या करेगा? So जो LXI H 2050 जो मेमोरी लोकेशन है उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करवाएगा कहां से? So this HL रजिस्टर पेयर. So basically होगा क्या? So let's come to Jamboard again. 20 will be stored in register H. 50 will be stored in register L. अब 20 और 50 इस तरीके से H और L में स्टोर हो जाएंगे and my memory pointer और program counter will point towards it. Now let's get back. So HL register pair point करेगा 2050. अब मुझे क्या करना है? So I want to store some value at that memory location. So I'm going to write MVI M comma then whatever memory location I want to store. Suppose मुझे enter करवाना है 02. So I'm going to write 02H. Always keep a habit of writing H after any number because microprocessor always works in hexadecimal. So आपको हमेशा H लगाना ही है. उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि you have to store another number at memory location 2051H. So 2051H पे स्टोर करने के लिए what I'm going to do? So simply I'm going to write INXH. अब INXH क्या करेगा? जो HL रजिस्टर पॉइंटर 2050 पे पॉइंट कर रहा था previously, now it will move one point further 2051 पे. You will see when we execute the program, it would be easier to understand. Next, what I'm going to do? So I'm going to save the number in that using MVI M instruction again. This time I want to save 0AH or simply we can write AH. Okay, A is equivalent to number 10 in hexadecimal. Always remember microprocessor always works in hexadecimal. So I'm writing A. Or you can take any other number as well. For example, if I want to take number 5 say. So I'm taking 5. Let's spare 0A. I'm taking 5. उसके बाद मुझे क्या करना है? जो नंबर था 2050 में उसको मुझे भेजना है एक्यूमुलेटर में और उसके बाद मैं उसको भेज दूंगा रजिस्टर बी में. सो हाउ एग्जैक्टली एम आई गोइंग टू डू इट? LDA 2050H.
अब LDA क्या करेगा, तो 2050H मेमोरी लोकेशन पे जो भी नंबर स्टोर्ड है उसको एक्यूमुलेटर में लोड करेगा। LDA स्टैंड्स फॉर लोड टू एक्यूमुलेटर। आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, so I want to send that number to register B. I'm going to write move B comma A. So what will it do? It will simply move the content of accumulator to register B. Next what I want to do, जो 2051 के अंदर जो value stored है, I want to store that value into accumulator. To do that what I'm going to do, so I'm writing LDA 2051H. अब दोनों values मुझे जहां चाहिए थी वहां मिल गई, एक वैल्यू रजिस्टर बी में, दूसरी वैल्यू रजिस्टर ए में। नाउ आई हैव बोथ ऑफ देम वेरेवर आई वांटेड देम टू बी। सो सिंपली मैं एडिशन करूंगा दोनों का, राइटिंग ऐड बी, बिकॉज एक नंबर एक्यूमुलेटर में है, जो नंबर एक्यूमुलेटर में होता है वो बाय डिफॉल्ट ऐड होता है विद द रजिस्टर यू मेंशन। सो रजिस्टर बी में जो वैल्यू है दैट विल बी एडेड इनटू रजिस्टर ए, एंड उसके बाद बिकॉज ये जो सम मुझे मिलेगा दैट विल बी अ हेक्साडेसिमल नंबर and I might want to convert it into my regular decimal number. So to do that conversion I'm simply going to write DAA, and after conversion I have been asked to store that number at memory location 2052C. So मैं क्या करूँगा, I am simply writing STA 2052H. STA क्या करेगा, 2052H पे स्टोर कर देगा वैल्यू। कौन सी वैल्यू, दैट वैल्यू विच वाज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, बिकॉज जो एडिशन होगा व्हेन यू राइट ऐड बी उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आएगा। आई वांट टू स्टोर मूव दैट वैल्यू फ्रॉम एक्यूमुलेटर टू 2052, सो आई एम राइटिंग STA स्टोर टू एक्यूमुलेटर 2052। वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 2052 में स्टोर कराएगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो आई एम गोइंग टू राइट हॉल्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद लेट्स run it one by one, but before that make sure you are on the correct address. I want to go to address 2052, so यहाँ पे मैं mention करूँगा 2050 और 2000 mention करोगे फिर भी आ जाएगा, and then I'm running the instruction one by one. So see, first जब भी मैंने compile किया program counter 800 पे आ गया, previously it was set on 00. Now when I run it, see HL में 2050 आ गया as I've said. अब क्या होगा, सो 2050 जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे 02 स्टोर होना चाहिए। सो 2050 यहाँ पे है, सो यहाँ पे अभी क्या है 00। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, सी 02 हैज बीन स्टोर्ड एट 2050। सेम वे जब INX आएगा तब HL में जो 2050 है वहां से क्या हो जाना चाहिए 2051। सी आ गया 2051, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हम चले गए। अब 2051 पे क्या स्टोर करवाना है 05। सो सी यहाँ पे क्या है 00, अभी जब मैं लिखता हूं MVIM,05 we get 05. So now you have 05 at 2051. Now what do we have to do, simply load the value stored in 2050 into accumulator. 2050 में क्या stored है 02। अभी देखो accumulator में क्या है, this value on the left hand side suggests the value of accumulator. So अभी 0 है, as soon as I run this instruction, see 02 आ गया एक्यूमुलेटर में। उसके बाद मुझे क्या करना है, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट मूव करना है रजिस्टर बी में। अभी रजिस्टर बी में क्या है देखो 0। एज सून एज आई रन दिस, देखो रजिस्टर बी में आ गया B 02। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, सो अभी मुझे क्या करना है 2051 में जो वैल्यू है 05 उसको मुझे लोड करना है एक्यूमुलेटर में। अभी है एक्यूमुलेटर में 02 द प्रीवियस वैल्यू। सो एज सून एज आई रन दिस वी गेट 05 इन एक्यूमुलेटर। Then we are going to add both of these values 5 and 2 with the help of add B. Accumulator में है 05, B में है 02, so दोनों का सम होगा 07 and that has been executed, और जो रिजल्ट है that has been stored at accumulator। देखो यहाँ पे 07 आ गया। Now DAA will convert the hexadecimal into decimal. 07 का hexadecimal और decimal will be same, so it will remain 07. एंड STA 2052 क्या करेगा, तो जो वैल्यू 07 थी जो एक्यूमुलेटर में थी उसको मूव करवा देगा 2052 पे। अभी 2052 पे देखो 0 है, सो एज सून एज आई रन दिस वी गेट 07 एट 2050 एंड halt will end our program. So that was the practical, and now to see how DAA works, let's take some
एडवांस्ड वैल्यू जो सिर्फ हेक्साडेसिमल को ही सपोर्ट करता हो, ऐसा कोई वैल्यू. So instead of 05, I'm taking 08, which I was talking about. Let's run it. See 02, 0A. Now see, when we add A into 2, what I will get? I should get C, which is equivalent to 12. So I'm getting C. अब C जो hexadecimal number है, that is required to be converted in decimal. अब C का जो decimal value है, that will be 12. So when I use DAA, see, it is getting converted in 12 and it will be stored 12 in the 2052 memory location. See. Now this is the primary thing. Now to understand more in detail how does DAA works, I prefer this website. यहाँ पे आप आ सकते हो, tutorials point. इन्होंने एकदम डिटेल में समझाया है how does a particular instruction works. So for example, I'm adding 38 with 45. So in regular decimal the sum is 83, but when you convert it into the hexadecimal the sum is 7D. Now you need to convert this 7D into into decimal value. So what I am going to do, so simply जहां पे भी नंबर, जो भी नंबर ऐसा नंबर मुझे मिलता है that is not similar in the case of hexadecimal and decimal, वहां पे I am going to add 6, because by adding 6 मुझे जो original decimal number है I will be able to acquire that. So see, they kept the same number here. 7 को आप बाइनरी में क्या लिखोगे? 0111. D को आप बाइनरी में क्या लिखोगे? 1101. So they kept 1101 and 0111 BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल. और उसके बाद अगर D is not similar in hexadecimal and decimal, so you are going to add 6 to this D. अगर यहाँ पे 7 में भी अगर ऐसा कोई नंबर होता 7 की जगह, फॉर एग्जांपल अगर A होता, तो यहाँ पे भी मुझे 0110 से ऐड करना पड़ता. So by at the end of the addition, what you get is 1000 and 011. That is 83, which is actual decimal conversion of these two numbers. So I'm asking you a question: what will happen if I send A B here? अगर यहाँ पे A होता और यहाँ पे D होता and I wanted to convert into the decimal, what I will do? So let's see that. So let's write it down here. I'm having A and I'm having B. So A को क्या लिखेंगे? A is basically 10. So what do you write to 10? 1010. And what do you write to D? See here. D को आप लिखते हो 1101. Okay, यहाँ से मैंने देख लिया 1101. Now what do I have to do? I have to add 6 to both A and D. So what I am going to do? How am I going to do? So 6 को क्या लिखोगे आप? That also you can see from here. 6 को आप लिख रहे हो 0110. So I'm going to write 0110 here, and I also am going to add 0110 here, and the sum will be, you always start sum from the immediate right part. So 1, then 1 plus 0 again 1, then 1 plus 1 10, there will be a carry, so 1 plus 1 again 10. Now that carry is being forwarded to here. 0 plus 0 is 0, but the carry which is being forwarded, because of that you will get 1. Then you have 1 plus 1 again 10, so you will get 0 and the carry will be forwarded again. Again you are having 10, again carry is being forwarded, and again 1 plus 1 10, so you will get 10 this time. So this will be the sum, actual sum, and when you convert it, 01 will remain 01, this 1 will remain 1, this 0001 is also called 1, and the other one will form 3, and it will come here. So what is the number you get? You get 113. The number you get will be 113. Now we shall test it as well. Right now we are having 2 plus 0a, you are getting 12. If I replace the 0a with ab, I will get
AD, and then we can check out, so 0 to AB, and when we add both of them, see here in the accumulator you are getting AD, and when we convert this AD into decimal, you get 13 that is being stored at here, and this carry flag is active. That means there is carry of 1 generated here in the place of 100, so you are getting 113, which actually matches with our results, 113. So that was the use of DAA. This is how you implement that instruction. So we'll keep this class or this video till here. If you have any doubts or queries related to the channel or the playlist, please feel free to mention that in the comment section below. I will be happy to answer them as soon as possible, as many as possible. If you have any feedback related to the channel or content, feel free to mention that as well. I will be seeing you next time with another video. Till then, thank you very much for listening, and goodbye for now.